Hello viewers, good morning. I am Navendu Kant, your English teacher. Today in this video lecture, we shall begin the next second chapter in your literature book, that is about Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में आपके लिटरेचर की बुक में प्रिस्क्राइब्ड सेकेंड चैप्टर जो नेल्सन मंडेला के पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल लाइफ से रिलेटेड है, जिसका सब टाइटल दिया हुआ है और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, this chapter is about Nelson Mandela's early life when he was a school or college student and his later life when he joined himself in a political movement and thus he became the president, the first black president of South Africa. Let's first know that this chapter is an extract from his own autobiographical book titled A Long Walk to Freedom, in which first he talks about the apartheid. Apartheid, you see here is a word which means what? A political system separating people on the ground of races or color of skin. In this book, first he talks about what? Apartheid. What apartheid was? Apartheid was a political system introduced in the whole world first by the British rulers, where first in South Africa, that separated South African people, native people, from one another according to their races, according to their skin, differences in their skin, the blacks and the whites. First, in this chapter, he talks about what? Apartheid. Later, he speaks about how he himself and his political party, his own political party, named African National Congress, spent a lifetime fighting against this very political system, that was apartheid, for the sake of their own native people, for the sake of their own people of the land. Okay? And how he had to spend almost 30 years of his life behind the bars of the prison, behind the bars of the jail. And finally, when democratic elections were held in South Africa in the very year of 1984, he became the first black president of his country by winning almost 252 seats out of 400 ones. ओके, हमने बताया कि इस चैप्टर के शुरुआत में वो सबसे पहले किस चीज़ की चर्चा करते हैं, वो बतलाते हैं एपार्थाइड के बारे में, जो एक पॉलिटिकल सिस्टम था जो इंट्रोड्यूस किया गया था पूरी दुनिया में सबसे पहले, किसके द्वारा? ब्रिटिश रूलर्स के द्वारा, वाइट पीपल के द्वारा,
सबसे पहले कहाँ किस कंट्री में, तो सबसे पहले साउथ अफ्रीका की कंट्री में उस ब्रिटिश रूलर्स ने एपार्थाइड के सिस्टम को लागू किया। ये सिस्टम क्या होता है मैंने ये भी बता दिया कि एक पॉलिटिकल सिस्टम था ब्रिटिश रूलर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाने वाला, जिसके जिसके बेसिस पे वहाँ के नेटिव पीपल को डिवाइड किया जाता था, सेपरेट किया जाता था बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ वाइट पीपल एंड द पीपल ऑफ ब्लैक स्किन। ओके, इसके बाद हमने ये भी बताया कि इस चैप्टर में बिगिनिंग टू एंड उन्होंने चर्चा की है अपने बारे में, अपने अर्ली लाइफ के बारे में, स्कूल और कॉलेज लाइफ के बारे में, फिर अपनी जो उनकी पॉलिटिकल लाइफ शुरू होती है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं, और इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करते हुए वो नट शेल में ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह उन्होंने खुद और उनकी अपनी पार्टी जिसका नाम क्या था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने लगभग पूरी जीवन गुजार दी अफ्रीकन नेटिव पीपल के फ्रीडम के लिए, उस एपार्थाइड के अगेंस्ट में स्ट्रगल करने में, फाइटिंग करने में अपनी उन्होंने पूरी जीवन समर्पित कर दी। फिर हमने ये भी बताया कि इन ईयर्स के दरमियान, फाइटिंग ईयर्स के दरमियान उन्हें किस तरह लगभग अपने जीवन का 30 साल गुजारना पड़ा जेल की सलाखों के पीछे, जेल में रह करके, और फाइनली जब साउथ अफ्रीका कंट्री में फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए तो उन्हें देश का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बनाया गया, क्योंकि उनकी अकेली पार्टी ने 400 सीट्स में से लगभग 252 सीट्स पे जीत हासिल की थी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर। नाउ the first opening paragraph talks about on this very day that was a historic day, that was a great historic occasion named as the inauguration, named as the inauguration of the day of democracy on the land in the country, in which world-class leaders from 150 countries came there, and they all saw how the inauguration as a part of historic function was smoothly organized. In this context, he seems to say in the first paragraph, for few days he had been badly besieged. Besieged means surrounded by. He had been badly besieged by these world-class dignitaries, world-class political leaders, those who came to their country for showing their respect and dedication to the installation of democracy, the first time democracy in the country. और फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि पिछले कुछ दिनों से वो वर्ल्ड क्लास पॉलिटिकल लीडर्स से घिरे रहे, डिग्निटरीज से घिरे रहे, वो सारे वर्ल्ड क्लास लीडर्स जो 150 डिफरेंट कंट्रीज से वहाँ आए थे, किस ओकेजन पे, ऑन द ओकेजन ऑफ द इनॉग्रेशन, ये देखने की अफ्रीका जैसी, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में जहाँ फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने जा रही है, जिस ओकेजन को नाम दिया गया इनॉग्रेशन, उस ओकेजन पे वहाँ किस तरह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है, इसे देखने के लिए जो लोग आए हुए थे उनसे पिछले कुछ दिनों से नेल्सन मंडेला बुरी तरह से घिरे हुए थे, और ये सारे वर्ल्ड क्लास लीडर जो वहाँ आए, इस
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के प्रति अपनी रिस्पेक्ट की फीलिंग को शो करने के लिए भी वहाँ इकट्ठे हुए। Nelson Mandela became the first president of his country on the very day of 10th May 1994. So, this special day was named by him as the day of the inauguration. Inauguration of what? The first democracy in the country. In this very context, in the next paragraph, he speaks that this inauguration took place in a lovely sandstone amphitheater of the Union buildings in Pretoria. वो आगे बतलाते हैं कि ये जो इनॉग्रेशन का मोमेंट था, फर्स्ट डेमोक्रेसी को ओपन करने का, इंस्टॉल करने का, इंट्रोड्यूस करने का जो ये मोमेंट था, जो ये इवेंट था, ये कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ एक एम्फी थिएटर में। और ये एम्फी थिएटर बना हुआ था किस चीज़ का? इट वॉज ए ब्यूटीफुल sandstone structure like stadium. Okay, amphitheater means a stadium like building structure without roof but with continuous rising steps. तो ये जो इनॉग्रेशन मोमेंट ऑर्गेनाइज किया गया वो कहाँ पे? तो यूनियन बिल्डिंग में बने हुए एम्फी थिएटर में, जो एक स्टेडियम टाइप की बिल्डिंग थी जिसमें रूफ नहीं होता लेकिन उसमें राइजिंग स्टेप्स टॉप टू डाउनवर्ड होता है, उस बिल्डिंग में हुई। ओके, उन्होंने आगे ये भी बताने की कोशिश की है कि फॉर पास्ट फ्यू डिकेड्स दिस एम्फी थिएटर और दैट वेरी यूनियन बिल्डिंग्स have been the seat of the white dominance that was now going to be the site for a new government of democratic type, a new government of non-racial form etc. और वो आगे उन्होंने बताने की कोशिश की है कि क्या हिस्टोरिकल कोई इंसिडेंस है, ऐतिहासिक संयोग है कि वो यूनियन बिल्डिंग्स और यूनियन बिल्डिंग्स के सामने का बना हुआ एम्फी थिएटर जो पिछले कई डिकेड से वो एक सेंटर था, वो एक सीट था किस चीज़ के लिए? तो वाइट डोमिनेंस के लिए, वाइट पीपल के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए वो एक सेंटर था, जो अब वो चेंज होने जा रहा है एक उस साइट के रूप में जहाँ से एक न्यू गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट शुरू होंगी। ओके, फॉर एंड ही ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल डिस्क्राइब्ड द वेरी फैक्ट दैट दिस वॉज द साइट ऑफ ए rainbow gathering of different colors of different people coming from different nations for the installation of the first time non-racial government and democratic government. Okay, और उन्होंने बताया कि वही यूनियन बिल्डिंग, वही एम्फी थिएटर अब एक उस प्लेस के रूप में बदलने जा रही है जहाँ एक डिफरेंट नेशंस और डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट कलर में दिखने वाले लोगों का एक रेनबो फॉर्म कर रहा है, जो ये सारे क्राउड वहाँ उपस्थित थे किस चीज़ को देखने के लिए? तो फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नाउ टू बिगिन दिस सेरेमनी
to begin the ceremony of inauguration, first of all, two presidents named Mr. De Klerk and Mr. Thabo Mbeki were sworn in. And when the turn for Nelson Mandela came, he also was sworn in as being the first black president for the people of South Africa. During the process of his own swearing in ceremony, he pledged himself to obey and uphold the constitution of the country, and then to devote himself to the well-being of the republic and people of his country. Okay? The next, what he seems to talk about in the book and in this very chapter of your literature book is the description about the colorful preparation by the officers of the South African Armed Forces, Defense Forces and Police Forces, showing their military power and also their devotion and dedication or loyalty to the newly formed democratic and non-racial government now headed by Mr. Nelson Mandela. Okay? Later he talks about the fact that after this very swearing in ceremony, Sapat Samaro, how then started the process of singing national anthems. Strangely, there was not a single song as being considered as the national anthem. Rather, two songs, meaning thereby two national anthem songs, national anthems were sung by the people of South Africa. Okay? The next, he seems to talk about the years and decades that he heard and read in several books when he was a college student, a school student, about the fact that there was a time in the history of South African people when, after the very Anglo-Boer War and just a few years earlier than his own birth, the cleverest British people had established some kind of a political system that was known as apartheid, according to which the entire people of South Africa were separated. They were separated into two groups, the group of white people, white skinned people, and the group of black skinned people. Okay? This was something that he seems to remember this very moment of inauguration when swearing in ceremony was going on. और नेल्सन मंडेला यहाँ पर मैं थोड़ी इमोशनली वो बतलाते हैं कि इस इनॉग्रेशन के इवेंट में जब मेरा शपथ समारोह हो रहा था तो मैं किस तरह से कुछ देर के लिए इतिहास के बीते क्षण में गुजर गया, बीते क्षण को याद करने लगा। तब इतिहास का वो पल, वो समय जब अंग्रेजों और बोर्स के बीच
एक बैटल हुआ जिसमें सेकंड बोर लोगों की हार हुई, अंग्रेज़ों की जीत हुई, और उसके बाद किस तरह चालाक अंग्रेज शासकों ने, रूलर्स ने साउथ अफ्रीका के कंट्री में लोगों को डिवाइड करने के लिए उनके रेसेस के बेसिस पे, उनके कलर ऑफ स्किन के बेसिस पे एक हार्शेस्ट हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल सिस्टम इम्पोज कर दिया, जिसे कहा गया एपार्थेइड, जिसके बाद पूरी अफ्रीकन सोसाइटी दो ग्रुप्स के लोगों के बीच बट गई, ब्लैक्स और वाइट्स। इतिहास के इस बीते क्षणों को यहाँ अपने शपथ समारोह के दरमियान उन्होंने याद करना शुरू कर दिया। That is all about today's video lecture of this very second chapter in your literature book. Thank you for attending the class.